Assalamu alaikum, Liaquat Birani today from classroom, and series in English and Hindi is both going on. Mr. Abdul Karim is with me, and already you know noun, pronoun, verb and other subjects today. Grammatical in English language, and for the helping to the students of the SIM, and the promotion of the education, even for the helping hand to the teachers and even for the students. So this is a series in English language. He अंग्रेजी में आ तो निबाड़ा सिंधी में भी हले थी या अंग्रेजी में भी हले थी तो ही अॼु असांखे कई साबित ॿुधायूं त एडवर्ब ऐं इन जा जेके टाइप्स कीअं आहिनि उनखे कीअं इस्तेमालु कजे त जेकॾहिं ही क्लिप्स जेके आहिनि उहे तव्हांखे लॻनि थियूं त तालीम जी बहितरी में ऐं शागिर्दनि जी वेलफेयर में नॉलेज शेयरिंग में तमामु बहितर आहिनि त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं असांजे हिन मामले में मदद कयो त अॼु एडवर्ब ऐं उन जा टाइप्स कई साहब प्लीज़ थैंक यू गॉड ब्लेस. So, Assalamu alaikum everyone. As you know that we are continuing the lecture series of grammar. Assam continuously JK parts of speech and one by one karanga. So today is the fifth day of and fifth parts of the speech. Just adverb ke bare mein nahi. First of all, I would like to define what is an adverb actually. It is a word. It is a word which modifies the meaning of verb, adjective, and adverb. Okay, so it is a word actually which modifies the meaning of verb, adjective and adverb. यो actually meaning जेका है verb जी यानी कि verb के meaning के modify करना, change करना, उन जी meaning के वधिक इजाफा करना. How suppose he fought in the battle bravely. He is so brave. They looked up in the sky. She always comes early. So these are four types of examples of adverb in which I have used adverbs. Bravely, so, up and always are adverbs which have added, which have modified the meaning of here of the verb, and here is it has the modified the meaning of adjective. इते छा कयो है न brave जो adjective है बहादुर उनके so जो adverb है न इन जी meaning के modify कयो है, इन जी meaning के वधिक information या वधिक add कयो है, इन जी meaning के change कयो है, इन जी meaning के छाजे करे चल कर इनके वधिक attractive बनाने जे bravely असां जो ॿुधायो त हे कहिड़े तरीक़े सां कमु कयो वियो. So these are the four types of. We further talk about all the types of adverbs in detail. First of all, we will like to discuss about adverb of time. Adverb of time actually असांखे time जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि. Suppose he will soon be recovered. जल्दी में सेहतयाब थींदो. Soon is a adverb of time. They come here daily. She always remember lessons before. अगर नहीं ये याद कर सकते चलिए आप. And they have reached now. So in this example, daily, before and now, these are adverbs of time.
ऐं काफ़ी ॿिया बि आहिनि जीअं अगो आहे, अगो मतिलबु अॻु में, हाणे, बिफोर माना बि अॻु में, ऑलरेडी, सून, डेली, इहे छा आहिनि, इहे एडवर्ब्स ऑफ टाइम आहिनि जेके असांखे टाइम जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि। ही विल सून बी रिकवर्ड, ही जल्दी में रिकवर थींदो, सिहतयाब थींदो। सो सून असांखे छा ॿुधायो, टाइम जे बारे में ॿुधायो। दे कम हियर डेली, ही उहे हिते रोज़ानो ईंदा आहिनि, डेली असांखे टाइम जे बारे में ॿुधायो। शी ऑलवेज रिमेंबर्स लेसन्स बिफोर all her brothers and sisters. She always remembers lessons before छा आहे, टाइम जे बारे में ॿुधायो। ही कम जेको आहे कहिड़े टाइम ते थींदो आहे। They have reached now, उहे हाणे पहुची चुका आहिनि। They have reached already, they have already reached, already is also an adverb, and if we can say they have reached ago, उहे अॻु में पहुची चुका है। So ये छा आहिनि, ये adverbs of time है। Then असां ॻाल्हि कंदा आहियूं adverbs of manner। एडवर्ब्स ऑफ मैनर असांखे इहो ॿुधाईंदा आहिनि त कोई कम इन विच मैनर, कहिड़े तरीक़े सां उहो कोई कम थिए थो। सपोज she wrote a letter well, हिन सही नमूने सां, यानी कि well is a manner, adverb of manner। they fought bravely in battle, she sang beautifully चाहे यो adverb of manner आहे। they performed well in the exams। okay, so adverbs of manner असांखे इहो ॿुधाईंदा आहिनि त कोई कम कहिड़े मैनर में, कहिड़े तरीक़े सां, कहिड़े वे सां थिए थो। ॾिसो फर्स्ट सेंटेंस में मां लिखियो आहे she wrote a letter well, हिन well में यानी कि चङी तरीक़े सां, सुठे नमूने सां ख़त लिखियो। सो well जेको आहे इहो एडवर्ब आहे जेको असांखे ॿुधाए थो कहिड़े मैनर में कोई कम थियो आहे। they fought bravely, कोई बहादुरी सां विड़िया। bravely छा आहे, एडवर्ब ऑफ मैनर आहे जेको ॿुधाए थो कहिड़े तरीक़े सां कोई कम थियो। he sang beautifully, हुन बेहतरीन नमूने ॻायो, सुठे नमूने ॻायो। beautifully जी माना है खूबसूरती सां न, इते इहा मीनिंग थी निकिरे बिकॉज़ इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज एन एडवर्ब जेको असांखे इहो ॿुधाए कोई कम, यानी कि ही जेको एक्शन आहे सिंग वारो, वो कहिड़े तरीक़े सां थियो। इहो ब्यूटीफुली, she sang beautifully। they performed well in the exams, उहे जेके सही नमूने एग्जाम्स में परफॉर्म कयो। well इते जेको आहे they ran fast छा आहे, असांखे एडवर्ब मैनर आहे। he calls them very loudly छा आहे, इहो बि एडवर्ब ऑफ मैनर आहे। इहे सॼा जेके असांखे ॿुधाईंदा फास्ट, लाउडली, वेल, ब्यूटीफुली, ब्रेवली एंड वेल, इहे असांखे एडवर्ब्स ऑफ मैनर आहिनि जेके ॿुधाईंदा त कोई कम कहिड़े वे में, कहिड़े मैनर में, कहिड़े तरीक़े सां थिए थो। सो आई हैव कंप्लीटेड दी two types of adverbs। third type of adverb is adverb of place। adverb of place, adverb of place actually tells us about place। वो असांखे place के बारे में ॿुधाईंदा आहिनि। suppose go there, come in, they looked up in the sky, she come out with friends। okay, so there he comes here daily।
I have written 5 examples. There, in, up, out, and here. These tell us about adverb of place. ये सब place के बारे में बताएं. उदाहरण go there. There जो का उते बने उते जो का ये adverb of time adverb of place actually. Come in अंदर अच्छो in जो का ऐसा place के बारे में बताया. They looked up in the sky. अब जो का बच्चे की गाल रखे वो सब place की गाल रखे. She come out with friends. बाहर की गाल करते हैं वो place है. He comes here daily. He है रोजाना India. So here की गाल है जी. So ये adverb of place है. There, in, up, out, and here are the adverbs of place. Okay. So now, असा discuss करना है adverbs of frequency, which is the last type of adverb of frequency. Adverb of frequency असांखे ॿुधाईंदो आहे त कोई एक्शन केतिरो लास्ट कयो केतिरो यानी कि हलियो फ्रीक्वेंसी उनजी केतिरी हुई सपोज they always play cricket. Always is adverb frequency. She never comes early. They failed the test twice. He calls him again. Okay. I often forget my phone. She sometimes goes out. Okay, so adverbs of frequency असां इहो ॿुधाईंदा आहिनि त कोई कम जेको आहे यानी कि play, comes, fell, call, forget and goes इहो केतिरी हद ताईं यानी कि केतिरो रिपीट थिए थो they always play cricket उहे हमेशा क्रिकेट खेलंदा आहिनि so always जेको adverb of frequency आहे जेको असांखे ॿुधाए थो त how frequently actually an action lasted कोई कम केसि ताईं हले she never comes early वो कॾहिं बि सवेर न ईंदी so never असांखे frequency जे बारे में ॿुधाए थो which is negative they failed the test twice उन्हनि ॿ दफ़ा टेस्ट में फेल थिया so twice माने कि ॿ दफ़ा छा थो ॿुधाए frequency थो ॿुधाए त उहो एक्शन केतिरो टाइम रिपीट थियो he calls him again जेको आहे adverb of frequency जेको ॿुधाए थो कोई कम यानी कि ही एक्शन जेको आहे केतिरो रिपीट थियो again I often अक्सर करे forget my phone मां अक्सर करे पंहिंजी फोन भुलिजी वेंदो आहियां सो ही जेको एक्शन आहे केतिरो रिपीट थींदो आहे अक्सर करे रिपीट थींदो आहे she sometimes goes out हीअ कॾहिं कॾहिं ॿाहिरि वेंदी आहे with her friends okay so sometimes जेको ॿुधाए थो त ही जेको एक्शन आहे go out इहो केतिरो रिपीट थींदो आहे so it repeats sometimes often काफ़ी ॿिया बि आहिनि adverbs of frequency usually आहे seldom आहे once I have they failed the test once only okay I said that I come to Ranipur once a week once जेको आहे हिते छा थो ॿुधाए adverb of frequency थो ॿुधाए daily monthly yearly इहे बि adverb of frequency okay so it was all about adverb and its types असां इहो जेको आहे सॼो जेके 4 टाइप्स पढ़ियासीं इहे ई adverb जा क़िस्म adverb of place adverb of time adverb of frequency and कहिड़ो adverb of time adverb of frequency adverb of place so इहे जेके 4 टाइप्स हुया ई adverb जा आहिनि इनखे सिंधी में असां ज़रफ़ चवंदा आहियूं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में असां preposition जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं and then जेके भी parts of speech रहियल उन्हनि जे बारे में so I think it is clear now that what is an adverb. Adverb actually modifies the meaning of verb, adjective and adverb.
इहो मीनिंग के वर्ब जी एडजेक्टिव या एडवर्ब जी मीनिंग के मॉडिफाई कंदो यानी कि चेंज कंदो हुन जी मीनिंग के सो जेके असां चार टाइप्स पढ़ियासीं टाइम प्लेस फ्रीक्वेंसी या मैनर उन्हनि में एडवर्ब जो कम ईंदो आहे त कंहिंखे वर्ब के एडजेक्टिव के या एडवर्ब के मॉडिफाई करे लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री जेको असांखे ॿुधाईंदो आहे त केतिरी एक्सटेंड ताईं केतिरी हद ताईं कोई कम थिए थो सपोज ही इज so tired she is fully prepared I am quite busy they are very intelligent okay so fleet quite and very these are adverbs of degree जेके बुधाइन था केतरी हद ताईं डिग्री था बुधाइन छा जी एडजेक्टिव से भी बुधाइन डिग्री या के एडवर्ब जी भी डिग्री बुधाइन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ही इज सो टायर्ड ये एडजेक्टिव यानी कि मॉडिफाई करे जो त के हद केतरी हद ताईं टायर्ड है सो टायर्ड he is fully prepared or completely prepared so complete and fully are adverbs of degree prepared जो एडजेक्टिव है जो बुधाए त केतरी हद ताईं prepared है fully जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो डिग्री तो बुधाए है एडजेक्टिव जी यानी कि क्वालिटी की डिग्री तो बुधाए आई एम क्वाइट बिजी मां तमाम बिजी हां बिल्कुल बिजी हां सो तमाम है बिल्कुल जेके सिंधी में सो इंग्लिश में चवना है क्वाइट so or we can say rather almost I am almost busy I am quite busy I am rather busy so these are adverbs of degree they are very intelligent I have modified the meaning of adjectives only suppose मान चलो they fought the battle very bravely इतने मान छा कयो इतने मान एडवर्ब के मॉडिफाई कियो वेरी जेको के बुधाए तो के हद ताईं ही जो एक्शन आ मैनर जेको केतरी हद ताईं ब्रेवली इट वाज वेरी ब्रेवली सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड द 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पंजे टाइप्स कंप्लीट थी एडवर्ब डिग्री सो पंजे टाइप्स में असां छा सिखियोसीं त एडवर्ब मॉडिफाई कंदो आ वर्ब जी एडजेक्टिव जी या खुद एडवर्ब जी मीनिंग सो आई थिंक इट इज नाउ मोर क्लियर inshallah we will come next with the next episode asan the episode sa gali which is I think preposition so take care and Allah Hafiz